हेलो, वॉइस चेक, आवाज चेक करो। आवाज चेक करो। हेलो, हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। मैं हूं सतीश कुमार। कैसे हो? एक बार मुझे आवाज का कंफर्मेशन कर दीजिए। ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। जल्दी से जल्दी हम सेशन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्स में मेजरमेंट्स का टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम। फर्स्ट टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द एरर एनालिसिस, second topic we have taken the measuring instruments, and today we are going for the third topic of the measurements, that is the measurement of power. All clear? So जल्दी से जल्दी कितने लोग लाइव में हैं एक बार मुझे हैश रेडी दिखाइए। हैश रेडी डाल के all of you those who are ready please type ready, and those who are yet to come please join as early as possible. आज का क्लास में मैं थोड़ा सा डीपीपी का क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो जितने लोग अब रेडी है एक बार मुझे रेडी दिखाइए फटाफट। चलो दोस्तों, आज का सेशन में टॉपिक्स है फर्स्ट डीपीपी डाउट्स। some लोग they have sent me some doubts in the last class. They have given some question numbers, so those questions now I am going to discuss. उसके बाद मैं डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहता हूं 2 वाट मीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट। 2 वाट मीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट, उसके बारे में पहले डायनेमोमीटर के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो फर्स्ट डीपीपी डाउट्स। लिसन डियर स्टूडेंट्स, हमने एरर एनालिसिस डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, एंड सेकंड टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पीएमएमसी डिस्कस किया है, एंड पीएमएमसी के साथ साथ मैंने मूविंग आयरन डायनामोमीटर का भी फॉर्मूलास दिया हूं, क्योंकि ये फॉर्मूलास के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आने की चांसेस है। मैंने पूरा लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलास आपको दिया हूं। डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड कंट्रोलिंग का टॉर्क का फॉर्मूला मैंने यस्टरडेज क्लास में मैंने टेबल दिखाया आपको। लास्ट में एक टेबल आई हैव गिवन, द टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट which talks about the deflection torque and controlling torque. So if you talk about PMMC, for PMMC what is the deflection torque my dear? The deflection torque formula is bina, and controlling torque is same for all, so that I can take it as Kc into theta. And moving iron के लिए फॉर्मूला क्या है? डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला हाफ I स्क्वायर dl by d theta my dear, and controlling torque का फॉर्मूला है kc theta. Got it? Next, electrostatic voltmeter का फॉर्मूला है, easy to remember, the td is equal to 1 by 2 v square
dc by d theta and controlling torque is equal to kc theta. नेक्स्ट डायनमोमीटर का फॉर्मूला है TD इज इक्वल टू I स्क्वायर dm बाई d थीटा एंड कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला है kc थीटा. ऑल ऑफ यू परफेक्ट विद दिस फॉर्मूलास? यस विकास, महक, अंजलि, वेरी गुड वेरी गुड. जितने लोग सेशन को देख रहे एक बार सेशन को लाइक करो बेटा, सेशन का लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यस सर. चलो, some people were asking based upon the chart box. Why? Because whatever the chart box in the live chart, जो कुछ DPP फॉलो कर रहे उन लोगों के लिए बेनिफिट होना है. जस्ट केवल पार्ट सुन के घर को जा रहे सो जा रहे उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा. मेरा बात सुनो, जो क्लास होने के बाद मैंने इतना श्रमा से DPP आपको भेज रहा हूं, द DPP रिफ्लेक्ट्स द मॉडल गेट क्वेश्चंस. अगर क्लास सुनने के बाद इमीडिएटली इफ यू सॉल्व द DPP क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा एंड आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा. एंड जो जितने लोग रेगुलरली DPP क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका डाउट्स मैं देखता हूं. क्लास होने के बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं प्रीवियस क्लास का लाइव चार्ट मैं देखता हूं. लाइव चार्ट में जितने लोग ये क्वेश्चन मुझे DPP में नहीं आया है, ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, दोस क्वेश्चंस ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर माय डियर. चलो, तो दिस इज द क्वेश्चन. एक्चुअली आंसर आल्सो हैव टिपन हियर. द आंसर इज D फॉर दिस क्वेश्चन. सम पीपल हैव टोल्ड दैट सर वी आर नॉट गेटिंग द आंसर. Okay, so please go through that question once again. Yeah, clear. A variable W is related to three other variables X, Y, Z as W is equal to XY by Z. The variables are measured with meters of accuracy plus or minus 0.5% reading. So plus or minus 0.5% reading, plus or minus 1% of full scale value and plus or minus 1.5% of reading. The actual readings of 3 meters 80, 20 and 50 with 100 being the full scale value for all three. The maximum uncertainty in the measurement of W will be dash. So कितने बच्चे, क्योंकि some people asked me yesterday 2, 4, 7, 8 questions are not coming. आपका DP का बुकलेट का नंबर है ये. The number question number 2 is from the DPP my dear. I am following the same question number. Okay. So see here what is the data given. He has mentioned 3 instruments X, Y, Z, 4. Okay, X, let us take this is X first. So this is X. This is Y and this is Z. 3 meters. So what is given here? A variable W is related to 3 other variables. Okay. X का accuracy कितना दिया है? 0.5% of reading. सबका full scale value कितना है? 100. So everybody is having a full scale value of 100 my dear. All the meters are having full scale value of 100. फटाफट first full scale value दिया है. Okay, good. Next, the readings of X, Y, Z are 80, 20, 50. So the readings of X, Y, Z. So if you take the readings of X, okay, sorry, the readings of X 80 and the Y is 20 and the Z is 50. दिख रहे हैं आपको? सब लोग को फॉलो कर रहे हैं? जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, सेशन को सीरियसली करना है. मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं आपके लिए. सो प्लीज टेक केयर ऑफ पेपर पेन एंड ट्राई टू बी इंटरेक्टिव इन द क्लास. ये 2 घंटा का सेशन मैंने जो कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सेशन से आपका एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना है एंड मुझे इंटरेक्शन होना है बस. So what is the value of X my dear? He has given X is having accuracy of plus or minus 0.5% of reading. So this is
plus or minus 0.5% of reading. First point. Next, second, the y is plus or minus 1% of full scale value. So this is plus or minus 1% of full scale value. Next, the z is plus or minus 1.5% of reading. Okay, plus or minus 1.5% of reading, my dear. Okay, so please use a calci. Everybody please carry the calculator. So this is 1.5% of reading. The only thing here we want to know w, yes or not? So w is equal to xy by z, my dear. But इसमें y का value is not a function of reading. Y का value is a function of full scale value. So 1% of full scale value में कितना होगा? 1 by 100 into full scale value. So that is going to become 1. Now percentage of limiting error for measurement of our reading, for measurement of reading कितना है? 20. तो ये कितना होगा? 1 by 20 into 100. So that becomes 5%, my dear. So this is 0.5% of reading. This is 5% of reading हो गया. All of you understanding? And this is plus or minus 1.5% of reading हो गया. So this is the expression with respect to x, my dear. This is the expression with respect to y, my dear. This is the expression with respect to z, my dear. सब लोग को क्लियर है? गुड इवनिंग शिवम जी, गुड इवनिंग। सब लोग एक बार ध्यान से देखो, मैं डीपीपी का क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो w is equal to x into y by z. So the percentage of x is given 0.5%, the percentage of y is given 5%, the percentage of z is given 1.5%. As I told you, combination of quantities, अगर ये एक्सप्रेशन कंटेन्स द डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज और प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, क्या होगा? उसका परसेंटेज एरर सम अप हो जाएगा। अगर समझ में आपको, अगर समेशन ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटीज है, देन उसका एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा। अगर डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज है, तो उसका परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगा। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट, माय डियर। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलो चलो चलो। So what is answer now? 0.5% plus 5% plus 1.5%, पूरा मिला के कितना होगा? 5 plus 1.5, 6.5. So answer is 7% of reading होगा. Is it clear, my dear? You understand? 7% of reading. कितने लोग को आ गया 7% of the reading? Some people are asking, some doubt है, जल्दी बताइए। अंजलि आपका आंसर सही हो गया, विकास आपका आंसर सही हो गया, शोएंकर कैसे हो? विकास शोएंकर, माय ओल्ड स्टूडेंट, नाइस टू सी यू। महागर्ग, वेरी गुड वेरी गुड। रेगुलर स्टूडेंट जितने लोग हैं, प्लीज फॉलो द सेशंस रेगुलरली। डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन में डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर क्लासेस आर गोइंग टू ऐड सर्टेन वैल्यू, माय डियर। ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर, माय डियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवम जी थोड़ा वेट करो, आई विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4। What is the answer for this question number 4? How many of you have done this question? But have you verified? I think the key was something wrong. I modified the key. Please verify, re-verify the DPP. You will be getting this as an answer. The percentage of limiting error, you are going to get 0.023. एक क्वेश्चन को कैसा करना है? आंसर बोर्ड पर है भैया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन डीपीपी में लिया हूं, आपके लिए आंसर्स दिया हूं मैंने, डीपीपी में चेक कर लो। ओके, वेदर सम पीपल हैव पॉइंटेड यस्टरडेज क्लास में, सर वी आर हैविंग सम डाउट इन दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई री-वेरिफाइड द क्वेश्चन एंड आई री-वेरिफाइड द आंसर, and if there is any mistake in the DPP in the yesterday, today I have verified it and I have corrected it and the new DPP has been uploaded.
ओके आप रीवेरीफाई कर सकते हो. यस. Soham Patra, it is nice to listen, sir. Because of your awesome lectures of measurement and sensors and industrial videos, I am studying medical imaging and informatics MTech in IIT Kharagpur. Very good. Nice to see you. Nice to see you. I wish you all the best for your MTech. IIT Kharagpur एक बड़ा प्रमुख इंस्टीट्यूट है, एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, and IIT Kharagpur is fundamentally good for instrumentation. It is the oldest instrumentation का professors है उसमें. I wish you all the best for your MTech. And I suggest, if time permits, if you have patience, try to complete the PhD also and come with a value doctorate from those IITs. If financial condition is good, there is no urgency for going for the job, then please I suggest you go for some research and do some proper value contribution to the society of instrumentation. I wish you all the best, my dear old student. Nice to see you here. Thank you. Chalo, what is the way of answering this question? The limiting errors for a 4 dial resistance 4325, इसमें एक एरर है, यूनिट्स में 0.2% है, टेंस में 0.1% है, हंड्रेड्स में 0.05% है, थाउजेंड्स में 0.02% है. क्वेश्चन को कैसा करना? तो 4325 है ना, 4325 को हम कैसा लिख सकते बेटा? 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5. So this is thousands, this is hundreds, this is tens, this is units. Am I right? Yes or not? Chalo, let us start with thousands. 0.02%. So on thousands कितना होगा? 4000 into 0.02%. Please make it fast, my dear. कैलसी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. 0.02 divided by 100 into 4000 कितना आ रहा है? It is coming around 0.8. Next, absolute error, इसको हम बोलते हैं absolute error. Next, 300 को कितना होगा? हंड्रेड्स पर कितना है परसेंटेज माय डियर? हंड्रेड्स पर 0.05% है, तो 0.05 बाई 100 कितना आ रहा है? एक बार कैलकुलेशन कर दो. 300 into 0.05 divided by 100. Okay, so that is going to come as 0.15. It's absolute value. Next, tens को देखो, tens को कितना है एरर? tens को है 0.1%. तो आराम से 0.1 divided by 100, तो कितना होगा आंसर? 20 into 0.1 0.02 हो जाएगा. नेक्स्ट, लास्ट यूनिट्स. यूनिट्स में 0.2% है, तो यूनिट्स आर 5, तो 5 into 0.2%, so 5 into 0.2 divided by 100, so that is going to become as 0.01. Now 4325 is formed as a combination of 4000 plus 300 plus 20 plus 5. So it is a sum of quantities. For sum of quantities, their absolute values can be added. Okay, so the resultant error will be how much? So the addition of all these things कितना आएगा? 0.8 plus 0.15 plus 0.02 plus 0.01. So कितना आ रहा है? It's coming around 0.98. So the error will be 4325 plus or minus 0.98. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर. तो परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर कितना? ये एब्सोल्यूट एरर है. दैट मींस 4325 में कितना परसेंटेज? कितना परसेंटेज इज इक्वल टू 0.98 माय डियर. वाई? बिकॉज ये एब्सोल्यूट है. क्लियर है? थैंक यू, थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड फॉलोइंग, वेरी गुड, एक्सलेंट. सो व्हाट इज आंसर माय डियर? कितना आ रहा है एक बार चेक कर लो. x का वैल्यू कितना आ गया? 0.98 इंटू, बोला रे बाबा जल्दी, 0.98 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4325, इट इज कमिंग एज 0.0226. दैट मीन्स इफ यू टेक एज अ परसेंटेज माय डियर, कितना आ रहा है? 0.0226. दैट मीन्स 0.023 आ रहा है. सो दैट इज द राइट आंसर.
अंडरस्टूड? प्लीज चेक द आंसर्स बेटा. अभी मैं डीपीपी में मैंने मॉडिफाई किया आंसर्स को, फिर आप एक बार डीपीपी को चेक कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है समटाइम्स कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, इसलिए मैं बच्चों को बोल रहा हूं रेगुलरली डीपीपी को फॉलो कर लो. अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, प्लीज पोस्ट इन द नेक्स्ट डेज लाइव क्लास. Immediately I will go through, after the class I will go through all your live chart. Okay, don't make waste of time. Your time and my time both are valuable time. अभी रात 8 बजे से 10 बजे, it's a very very valuable time, and gate is very very nearest to us. Table 1 month time is there, so don't waste the time in silly comments and unnecessary charting. Okay, so please focus. Whatever the valuable doubts that you are facing, please post it, because mentally I will be having certain list in my mind. Today in 2 hours I want to cover this. Whatever the plan I would do, definitely what happens when I come to the live class, definitely some topics are going to be missed because of the flow of the teaching. So later on, after the end of the class, I will go through, and if possible in the next class I will try to add certain content in the next class. So all of you got it. 0.023 genuinely जितने लोग practice कर रहे, yes, 2.3%. Yeah, already mentioned as percentage, right? Percentage of limiting error. (0.023) 4325 में 0.023% is equal to 0.98. प्रतीक शर्मा, 4325 में 0.023% is not 2.23 ना, 0.023%. चल, let us go for next question. This is the question number 4. It's a question number 4. Chalo, next let us go for question number 7. Some people asked me question number 7 also. Yeah, try to answer this question. मैंने आंसर भी दिया हूं आपको, लेकिन आपका आंसर चेक करो, आपका डीपीपी का आंसर से चेक करो, कुछ मिस्टेक है तो प्लीज गेट इट मॉडिफाइड. Those students who have done some exercise, those students at homes certain DPP practice किया, उन लोगों के लिए ऐसे सेशन माइंड रिवीजन की तरफ से होता है, जस्ट रिवीजन की तरफ से होता है. The power factor and phase angle in a circuit carrying sinusoidal currents are determined by measurement of current, voltage and power. The current is read as 2.5 amperes on a 5 amperes ammeter. The voltage as 115 volts on a 250 volts voltmeter, and the power as 220 watts on a 500 watts wattmeter. That means ये value है ना, second value is a full scale value. Okay, so what are the informations he has given? So there is a current, there is a voltage, and there is a wattmeter. करंट का रीडिंग कितना दिया है? फुल स्केल वैल्यू 5 एम्पियर्स है, 2.5 एम्पियर्स इज अ रीडिंग, तो फुल स्केल वैल्यू है 5 एम्पियर्स, एंड दिस इज रीडिंग इज 2.5 एम्पियर्स. नेक्स्ट, वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है? 150 वोल्ट्स और 250 वोल्ट्स वोल्टमीटर, so this is the 250 volts voltmeter, and this is 115 volts. Next, the power is 220 watts and a 500 watts wattmeter, so these are 500 watts and this is 220 watts. Okay, right. Chalo, what is the question given? The ammeter and voltmeter are having guaranteed accuracy to plus or minus 0.5% of the full scale. So here the percentage of guaranteed accuracy error for ammeter is how much? 0.5%. So this is 0.5% and this is also 0.5%, and whereas this one plus or minus 1% of full scale value. So this is guaranteed accuracy error is plus or minus 1%.
Question asked is what is the calculate the maximum uncertainty in power factor. कैसा calculate करना है? We know always power का formula है power is equal to VI cos phi. Am I right or not? Average power. So this is the power factor. So cos phi is equal to P by V into I. So this is a power factor, my dear. So power factor is equal to P by V into I. That means percentage error in power factor कितना होगा? Percentage error in power factor will be percentage error in power plus voltage plus current होगा. Yes or not, my dear? Why? Because it is a division of quantities, my dear. Division of quantities. Power, voltage and current. Division of quantities. Chal. Very good, very good. So, but relative static, that limiting error we have to calculate. So, how to calculate the limiting error here? See here. So, percentage is 0.5% with respect to full scale. Jitne log kir rahe? How many of you are doing here? Please do it fast. I am waiting for your answer. कल का DPP पूरा बन गया. Excellent. Superb. Nice. 10 क्वेश्चन भी बता देना. 10 क्वेश्चन बोलो तो क्या है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. 10th क्वेश्चन यू आर आस्किंग और 10 क्वेश्चंस? यू आर एक्सपेक्टिंग 10 क्वेश्चंस, माय डियर. ओके, नो प्रॉब्लम. जो you go on typing in the chat box, with depending upon my time I will tell you. Okay, I have to add that question, my dear. शिवम जी next class में. Okay ना, next class में जाएंगे. चलो, what is the answer for this? 0.5% of full scale value, that means 0.5 by 100 of 5 amperes. कितना आएगा? कैल से यूज करो फटाफट. 0.5 divided by 100 into 5, so that is coming as 0.025. that is the limiting error. So for a measurement of for 2.5 amperes, what is the percentage of limiting error? 0.025 divided by 2.5 into 100. So divided by 2.5 into 100, so that is going to come as 1% in current. Next, this one, 0.5% of 250 volts. So 0.5 by 100 into 250 volts. Calculate कर लो. 0.5 by 100 into 250 volts कितना आ रहा है? 1.25 आ रहा है. So now for a measurement of 115 volts. So for 115 volts, what is the limiting error percentage में? 1.25 divided by 115, my dear. 115 into 100 कितना आएगा? चेक करो. Divided by 115 into 100 is coming as 1.06. that means for voltage we are getting it as 1.086 percentage. Got it? Next, watt में, this is 1%. 1% of 500 watts, that means 5. Now for a measurement of 220 watts, it will be how much? 5 by 220 into 100. Am I right? Any mistake? Please tell me. 1% of 500 watts. Perfect. So 5 divided by 220 into 100. So that is coming as 2.27. So power में कितना आ रहा है? 2.27% आ रहा है. Perfect, Pratik Sharma. So now please calculate the power factor cos phi. So क्या सर कितना होगा आंसर? 4.35% होगा. Please sum up 1 plus 1.086 plus 2.27. तो पूरा मिला के कितना आ रहा है? 4.356. तो पावर फैक्टर में परसेंटेज कितना आएगा? समेशन ऑफ दिस आंसर आ रहा है 4.356%. सबको आंसर आ चुका है? प्लीज चेक. 4.35. वेरी गुड मनीष. विशाल सोयंकर, विकास सोयंकर, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम
दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग 100% स्कोर इन मेजरमेंट्स। जितने भी वेटेज हो, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन पक्षम के लिए 6 to 8 मार्क्स भी पॉसिबल है। जितने ही स्टूडेंट्स हो, अगर एरर्स में क्वेश्चन आ गया गेट एग्जाम में, जरूर आपका अटेंशन 100% वो मार्क्स को ग्रैब करना है। हाउ मेनी ऑफ यू चैलेंजिंग? डेफिनेटली सर, आई एम गोइंग टू गेट पक्का, whatever the question comes from error analysis, I am going to crack it. Yes, perfect. Sure? पक्का कॉन्फिडेंस है? लॉक कर दीजिए। मजा आ गया बाबा। चलो, let us go for the next question. Question number 8 in your booklet, in your DPP का क्वेश्चन सही है। Some people are asking this question also, some people are asking the answer should be B. Answer should be B. Please check ये कैसा करना है। I think this type of model question मैंने डिस्कस किया हूं क्लास में। Yes. देखो, a Wheatstone bridge is balanced with all 4 resistances equal to 1 kilo ohm each. So if you see my dear, I already told you 4 resistances Wheatstone bridge है। So there is a Wheatstone bridge like this. Of course ये ब्रिज टॉपिक में आ सकता है, लेकिन आपको Wheatstone bridge का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना है, क्योंकि एवरी ईयर वी आर गेटिंग ए क्वेश्चन। So this is the supply voltage. So initially all the resistors are equal. What is the question given? देखो, a Wheatstone bridge is balanced with 4 resistors equal to 1 kilo ohm each. So this is 1 kilo ohm, this is 1 kilo ohm, this is 1 kilo ohm, this is 1 kilo ohm. Fine. Next, supply voltage is 100 volts. The Vs is given as 100 volts, my dear. The value of one of the resistance changes to 1010 ohms. So this value changes to what? R plus delta R. That means the delta R is how much, my dear? R is equal to 1000 and delta R is equal to 10 ohms. So delta R का value 10 ohms है, supply voltage का value 100 volts है, initial resistance is 1000 ohms है. Then the V bridge का formula, there is a standard formula called quarter bridge. क्वार्टर ब्रिज, क्वार्टर पता है विशाल जी? क्वार्टर पता है प्रतीक जी? 4 रेसिस्टर्स में एक रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, 4 रेसिस्टर्स में एक रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है। 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर पता है आपको? क्वार्टर हाफ फुल, सबको पता होगा क्वार्टर हाफ फुल बोले तो क्या है। हाँ, डन इन द क्लास, वेरी गुड। बट सब मॉडल डिफरेंट है, इधर सेंसिटिविटी अलग की बात है। सो Vs कितना है हियर? If you check the Vs, this is the Vs is 100, this is 4 and the delta R is how much? 10 and R is how much? 1000. So 1000 cancel, 1/4 means 0.25 volts. Sensitivity of the bridge पूछा, sensitivity of the bridge बोलो तो V bridge by delta R। तो आंसर कितना है? 0.25 volts by delta R is how much? 10 ohms. 10 ohms. That means 0.025 volts per ohm. That means 25 millivolts per ohm. समझ गया आपको? ओके, ये क्वेश्चन था सर। ओके, मैं देखता हूं, एक सेकंड। 0.025 volts. See my dear, that is 0.025 means 25 millivolts. Option B is the right answer. मजा आ रहा है सब लोगों को? All of you are comfortable, my dear? Yes, Shivam. I'm going through now. Don't worry. It is electronic measurements का क्वेश्चन है। चलो, comfortable? Shall we go for the next question? फटाफट प्लीज रिस्पॉन्ड दीजिए। सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज बोलो तो ब्रिज का आउटपुट वोल्टेज बाय डेल्टा आर। फटाफट प्लीज मेक इट फास्ट माय डियर। Everybody should interactive. Should be interactive. Everybody should be interactive रे बाबा। जितने लोग क्लास में है, विकास सोयंकर, अपर्णा,
शिवम जी, जूही चावला, एवरीबडी। फटाफट चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आई थिंक इट इज इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट क्वेश्चन। शिवम जी पूछ रहा है क्वेश्चन को, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10th क्वेश्चन इन योर 10th क्वेश्चन ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज द क्वेश्चन? ए मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, please post the questions in the next class so that I can attach the questions in the slides. A voltmeter has uniform scale with 100 divisions. 100 divisions beta, 100 divisions फटाफट। The full scale reading, full scale value is 200 volts फटाफट। okay, 1/10th of the scale division, 1/10th of the scale, 1/10th of the scale division is estimated with is readable or estimated. What is the resolution of the instrument? That was the question na Shivam ji? Yes, resolution of the instrument. Juhi Chawla, that is the question na? Very good, very good, very good. Listen carefully. First of all, what is the resolution of the voltmeter? Resolution of voltmeter बोलो तो क्या है? Resolution of voltmeter बोलो तो क्या है? The minimum increment in voltage detectable, minimum increment in voltage detectable by voltmeter, that is what we call as resolution, my dear. Okay, now let us see this question, my dear. Excellent, Pratik Sharma. So a moving coil voltmeter has 100 divisions, so there is a 100 divisions voltmeter. Full scale value is 200 volts. The full scale value is 200 volts. 100 divisions should contribute to a total of 200 volts, Shivam ji. Then one division will be contributing how much? One division will be contributing how much? 2 volts na? One division contributes 2 volts, my dear. So this is 2 volts. Next comes 4 volts. Like that 100 divisions are there. Got it? Like that 100 divisions are there, my dear. तो एक एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? 2 वोल्ट्स है। लाइक दैट कितना डिवीजन है बेटा? 100 डिवीजन है। फॉर क्लियर। नेक्स्ट 1/10th ऑफ ए डिवीजन, दैट मींस इफ यू टेक वन डिवीजन, व्हाट इज वन डिवीजन? वन डिवीजन का वैल्यू कितना है शिवम जी? एक डिवीजन का वैल्यू कितना है प्रतीक जी? एक डिवीजन का वैल्यू कितना है जूही चावला जी? एक डिवीजन का वैल्यू है 2 वोल्ट्स। ओके, 1/10th ऑफ द 1/10th ऑफ द डिवीजन, एक डिवीजन का वैल्यू 2 वोल्ट्स है। 1/10th ऑफ 2 कितना होगा बेटा? 0.2 होगा। दैट मींस 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8। समझ गया आपको? So the minimum increment with a certainty, with a perfectness, it can read how much? 1/10th of the division. That means this is a 1/10. So इसका वैल्यू कितना है बेटा? 0.2 है। That means if this particular voltmeter starts moving, if this particular voltmeter starts increasing its pointer position, if the particular voltmeter starts detecting particular position, the minimum increment it can sense is how much, my dear? The minimum increment sense is 0.2 volts. The minimum increment detectable by a voltmeter को हम बोलते हैं resolution बोलते हैं। So 0.2 volts is the right answer, my dear. एक्सेलेंट प्रतीक जी, जूही चावला एक्सेलेंट। विकास शोयंकर कैसे हो बेटा? सर व्हीटस्टन वाले में 250 मिली वोल्ट्स आ रहा है। 250 मिली वोल्ट्स कैसा आ रहा है बेटा? 0.025 वोल्ट्स। अच्छा अच्छा, 1 सेकंड, कुछ मिस्टेक किया हमने। टू 250 कैसे आएगा बेटा? अरे सतीश जी, 0.025 वोल्ट्स पर ओम बोलो तो 25 मिली वोल्ट्स ना? सही है ना?
भाई जी ऐसा टाइम वेस्ट मत करो बेटा, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, don't waste the time, please make calculation perfect because we have to move actually. 0.025 volts बोलते 25 millivolts है, 25 millivolts per ohm सही है। चलो 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 सतीश जी, चलो दैट्स इट बेटा। और कुछ डाउट्स है तो प्लीज पोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट बॉक्स में। कल का सेशन 10 क्वेश्चंस मूविंग आयरन पीएमएमसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिया मैंने, डीपीपी 2 में डीपीपी 1 में स्टिल आपको डाउट्स है, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्री बॉक्स so that in the next class I will add those questions, I will try to read out. Okay, फटाफट एक बार मुझे thumbs up दिखाइए, ready for today's topic. Today's most important topic is power measurement. Power measurement के पहले हमने डायनामोमीटर के बारे में कुछ बेसिक्स लेना है। एक बार मुझे thumbs up दिखाइए जल्दी से जल्दी आज का सेशन के लिए। फटाफट गेट रेडी, गेट रेडी। కాదు ఒకటే నెంబర్ మీద ఉంది। चलो my dear, next topic is dynamometer. Yes, see basically PMMC permanent magnet है। Who is the permanent? Magnet is permanent. And who is the moving parameter? The coil is the moving element. Okay, coil is the moving element. It measures what? Only DC. Next there was one instrument, just in brief yesterday मैंने आपको formulas दिया है। प्लीज गो थ्रू द कंस्ट्रक्शनल फीचर, आप कोई ना कोई टेक्स्ट बुक ओपन करके उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट्स नहीं है, जस्ट मूविंग आयरन का आप कंस्ट्रक्शनल फीचर्स देखे तो आपको पता होगा। हियर आई एम टेकिंग मूविंग आयरन। मूविंग आयरन में क्या है? मूविंग आयरन में मैग्नेट इज नॉट परमानेंट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलो तो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट ए कॉइल। The coil is the magnet. Whenever the current travels to the coil acts like a magnet. Whenever there is no current through the coil will not act like a magnet. That's it. Very good, very good. And what is the moving part? The moving iron disc, iron vein or iron disc or iron vein. So this is the moving element, my dear. Moving element, and it is suitable for both AC as well as DC. So next comes the dynamometer, my dear. In dynamometer, what is going to happen? Dynamometer is going to take the moving coil arrangement here, and it is going to take electromagnet here. So the dynamometer is called as, dynamometer is going to take certain feature from the PMMC and certain feature from the moving iron. तो इसको हम बोलते हैं EMMC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट फीचर एंड दिस पर्टिकुलर मूविंग कॉइल फीचर, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट फीचर है ना बेटा, सो दिस इज फ्रॉम MI इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। This nature is extracted from moving iron and this particular nature from PMMC. So it is taking a characteristic of moving coil from the PMMC and it is taking a characteristic of, excellent my dear, it is taking a characteristic of moving iron from electromagnet. That's why
dynamometer is having the transfer characteristics. Dynamometer is called a transfer type instrument. हम क्या बोलते हैं उसको, डायनामोमीटर को हमको ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन. समझे आपको? And one of the important features that you have to understand is its coils arrangement is so interesting. The coils will act like a magnet. Okay dear? Perfect? Excellent. So electromagnet moving coil बोलते हैं. उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर के बारे में एक बार देखेंगे. उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर कैसा होगा. So it contains coil. The coils are split into two parts. So this is the current coil, my dear. So one coil only, actually single coil है, लेकिन for understanding purpose it is split into two parts. One is the current coil. So this current coil is very thick in size and shorter in length. Thick in size and shorter in length, my dear. Okay, so this one I can say this is what we call as fixed coil. What we call this as fixed coil, FC. Got it? And here comes a load. At the center we are having a moving coil, my dear. So we are taking a particular arrangement like this. This is the fundamental basic diagram of dynamometer. The problem with the digital board ये है बेटा, straight line नहीं आएगा, तो straight line का वीडियो आ रहा है, white board है तो फटाफट. Yeah. So now see here what is going to happen. First let me explain about the coils. All are coils only, my dear. Here all are coils only. There is no core magnets here. All are coils only. So this is the fixed coil and this is the moving coil, my dear. इसको हम बोलते हैं moving coil. And now what is going to happen, my dear, here? Whenever the current, this is a moving coil. So the nature of the moving coil and the nature of the fixed coil, let me write here some points. The fixed coil is also called current coil because it supports the passive. Fatafat, don't waste much time on the construction. There is one requirement, as your preparation is just 1 or 2 months before you are making like a crash course. You should follow lean methodology. Juhichi, Chivamchi, we have to follow lean methodology. What is this lean methodology, my dear? Any idea? Whenever you are preparing for a particular exam, which is very, very short duration is there, 2 months time is there, 3 months time is there, you have to go through particular subject, vast subject, very big subject, like you have to follow a lean methodology. Any idea of this lean methodology? I am giving some 10 seconds of time. Please tell me what do you mean by lean methodology? 10 seconds. ఏమనుకోకు జరుగుతుంది నా ఇమేజ్ పక్కన చాట్ బాక్స్ కామెంట్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి వెంటనే నాకు పంపించు ప్లీజ్. అది లైవ్లో పెట్టాను నేను, స్టాటస్ పెట్టుకోవాలి. No idea. Okay. Lean बोलो तो learn as per need. This particular strategy you have to follow, my dear. Like the session, guys. What is a lean, my dear?
थैंक यू अपर्णा जी। लीन मेथोडोलॉजी बोलो तो लर्न एज पर नीड। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, एक एक इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शनल फ्यूचर पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ाने की समय नहीं है, डिस्क्रिप्शन याद करने की समय भी नहीं है आपके पास। तो जो हमको चाहिए दैट वी हैव टू नो, प्लीज फॉलो दिस, लर्न एज पर नीड, लर्न एज पर नीड, लर्न एज पर नीड। प्लीज सब लोग हैशटैग डाल दो, हैश लीन, लर्न एज पर नीड। इफ यू आर प्रिपेयरिंग सम network theory में suppose you are practicing 2 months crash course, what you will do? The most frequently asked topic, suppose Thevenin's theorem is there, Thevenin's theorem का basic thing क्या है, फटाफट उसको problems, voltage division rule उसका problems, KCL का problems, KVL का problems। Similarly measuring instruments है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी एक सहानी पढ़ना शुरू किया, डेफिनेटली क्या होता, एक सहानी एक पिलो बन सकता है आपके लिए, क्योंकि 2 महीने के पहले जस्ट बिफोर 2 months इफ यू ओपन एक सहानी टेक्स्ट बुक, आपको एक सहानी बड़ा कहानी की तरफ से दिखता है। एक सहानी कैन बी यूज्ड एज ए बेस्ट डंबल, एक सहानी बेस्ट यूज्ड एज ए बेस्ट पिलो, बट इफ यू ओपन जस्ट बिफोर 2 months you cannot understand anything, and I don't suggest studying the text book before the 2 months। टेक्स्ट बुक स्टडी करने के लिए, टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करने के लिए तरीका अलग है, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस होना है, उसके लॉन्ग ड्यूरेशन होना है माय डियर। Yes. We have to take short notes. We have to attend these particular lectures from the great faculties, and faculties who will teach as per the need, not wasting the time. Okay, so please follow this. Learn as per the need. Not only for gate examination, my dear. Maybe some of the people of you may be doing the jobs also. Suppose recently you entered into embedded system job. There you may be working on some LPC 2148 microcontroller, or you may be working on an Atmega microcontroller, but in BTech you have studied 8051 microcontroller. So what you have to do now, immediately you have to open Atmega microcontroller datasheet, fatafat instruction, open the software, open the Keel software, practice the instruction set, that's it, over. Learn as per need. आजकल मार्केट में बहुत सारा टेक्नोलॉजीज हैं, सब टेक्नोलॉजीज आप नहीं, यू कैन नॉट फिक्स इन योर माइंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। मुझे अभी रिक्वायरमेंट क्या है, गेट के लिए जो चाहिए वो पढ़ाओ बस। माय डियर लिसन हियर, कंस्ट्रक्शनल फ्यूचर में इतना डेप्थ जाने की बात नहीं है। बेसिक पॉइंट्स क्या है, एक फिक्स्ड कॉइल है, एक फिक्स्ड कॉइल को हम बोलते हैं करंट कॉइल बोलते हैं। करंट कॉइल का शॉर्ट फॉर्म है सीसी। क्या है शॉर्ट फॉर्म? सीसी। करंट को अलो करना है, करंट को अलो करने के लिए बेसिक फीचर क्या है, इट शुड बी थिक इन साइज, thick size, shorter length. That is a basic constructional feature. Why thick size? If you see the picture like this, my dear, if you see the thick size, what happens to the radius, my dear Pratik ji? Here the diameter of this particular will be more. When diameter is more, area of cross section will be more. When area of cross section is more, resistance will be less. When resistance is less, current passing through the current coil will be more. That is the fundamental feature you have to remember. Whether it is an electrical student watt meter, whether it is an electrical student energy meter, whether it is any type of instrument, the fundamental feature of current coil is expected viva question, expected interview question, expected non-electrical question, expected electrical question, expected gate question, expected Genco question. What is the constructional feature of current coil, my dear? Current coil must be thick in size. Thick size, मोटा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा आएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं करंट कॉइल बोलते हैं। मजा आ गया? नेक्स्ट कमिंग टू द मूविंग कॉइल, my dear. Next coming to the moving coil, my dear. So if you see the moving coil is called as potential coil, क्योंकि अगर आपने पावर मेजरमेंट करना चाहते हो, पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा, V इंटू आई। बस एक कॉइल से हमको वोल्टेज मेजर करना है, एक कॉइल से हमको करंट आना है, बस
सो पोटेंशियल कॉइल, उसको हम बोलते हैं प्रेशर कॉइल, पीसी, प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं, और वोल्टेज कॉइल, और वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, these are the different words, or pressure coil. मजा आ रहा है? And this particular must be thin size, longer length. The reason is इसमें thin size होना है, length ज्यादा होना है. Remember this point. When length is more, my dear, there is a possibility of current passage taking more time, so there is a possibility of potential development for better understanding. In a better way हमको potential आएगा. Do you understand, my dear? Excellent. So please make a note of these points, my dear, fast. So this is the fundamental feature of the coils. And always remember, in dynamometer or in an electromagnet, why it is called electromagnet, my dear? Any idea? Whenever the current passes like this, whenever the current passes like this, the current is going like this, so there is a possibility of magnetic field. So these two particular coils are going to act like a magnetic bars. This is a north pole, this is a south pole. So this is going to act like a magnet. This is going to act like a magnet. According to your Fleming's rule, when a current travels in a coil, there is a field direction. So the field direction is going to happen like this. So these are two magnets. I am creating certain space between the coils, such a way there is a moving coil can enter into this between the two coils, and between the two magnets, one more electro coil came, so that there is a possibility of force of attraction, force of repulsion. समझ गए आपको? And this is what the concept of moving iron. Actually, moving iron I have not discussed much. In moving iron, the same concept. In the place of moving coil, there is a moving disc. So whenever this particular coil is energized, there is a magnetic flux. This magnetic flux makes there is a deflection. Understood, my dear? Excellent. Permanent magnets are replaced with fixed coil. That's why they are called air cored coils. And please tell me, which is the more weight, my dear? Which is the more weight? PMMC is more weight, EMMC is more weight. Weight of PMMC or weight of EMMC? Which is more? Weight of PMMC is more, by the year, because PMMC contains a permanent magnet. EMMC contains only coils, and these all coils are air cored coils. All coils. Total all coils are air cored coils, my dear. Can you tell me, electrical student, what is the advantage of air cored coils over iron cored coils? Electrical students. What is the advantage of air cored coils over iron cored coils? Excellent. Low losses. At higher frequencies, there are low eddy losses in air cored coils. That's why when you want to go for AC measurement, in AC measurement means the frequency is more than 10 Hz, more than 20 Hz, 50 Hz ka frequency hai. At higher frequencies, we want to eliminate these errors. That's why we are going for air cored coils, my dear, comparatively iron cored coils. Of course, iron cored coils are more permeable in nature, but at higher frequencies, what happens? There is a great concept called skin effect. The electrons which are moving at the center of the iron, which are going to be attracted towards the skin. When they are attracted towards the skin, they are going to come from the center to the top. When they are going from the center to the top, there is a circular path. This circular path creates an eddy current. This eddy current creates an eddy flux. This eddy flux opposes the main flux. इसकी वजह से क्या होगा? The more is the frequency of the current, the more is the alternating flux, the more is the alternating eddy flux, the more will be the opposition. There is a loss. That's why iron cored coils will suffer with eddy power losses, eddy flux losses at higher frequencies.
In all our electrical measurements of AC measurement, alternating current measurement, our frequency is 50 Hz, very high frequency. At that high frequency, if we use the iron cored coils, we are having a lot of losses. But if we use air cored coils, the losses are rectified. That is one advantage. Second advantage, the instrument weight has been reduced. That is the second advantage. Portability is easy compared to PMMC. These all are the features. मजा आ रहा है मनीष जी? सुमित पवार जी मजा आ रहा है? टीके ध्रुमो शिवम विकास स्वयंकर अपर्णा कुतिबा सब लोग हाँ. These are the extensive things you have to take care. Lean methodology, what actually we need from the constructional feature. हमको क्या bits form होता है? What is the possibility of framing the questions? Why? Because MSQ है, MSQ है. चलो my dear. So now here what is a major concept I want to tell you my dear. Whenever a positive pulse goes like this, whenever a positive pulse goes like this, there is a magnetic field, there is a magnetic field, and this is also another magnet field. Why? Because the same current is traveling here. But the cable one point is the direction of the current is changed, and definitely there is smallest phase difference is possible between this current and this current. So if you take this current as I1, if you take this current as I2, if you take this current as Im sin omega t, and this current will be Im sin omega t minus phi. There is a smallest phase shift because of the construction. Then what happens between the two magnets? This particular magnet is suspended. This is not a magnet actually, it's a coil only. It is also a coil only my dear, but it is suspended. This is also suspended. It also becomes like a magnet. So between these two magnets, one magnet, there is a repulsive force. Because of the repulsive force, what happens? This particular coil ka position aisa aayega. So this coil is going to move like this. So if I have a pointer to it, this pointer gets a deflection my dear. This pointer gets deflection. And beauty of this instrument is, अगर आपको negative pulse आ गया, आपको negative pulse आ गया, क्या होता है? Deflection is not going to be reversed, my dear. Remember this point. Deflection is not going to be reversed because when this pulse changes, this field direction will change. This will be south-north. This also will be south-north. When this is south-north, this also is going to be changed its direction. The deflection continues. For both the positive and the negative pulses, the deflection continues. Okay, my dear. And this all is happening because of the mutual inductance concept, my dear. Now I am going directly to the answer. The deflection torque TD is given by the formula as I square into dm by d theta, my dear. I am not going for the derivation. Maza aa raha hai? I am not going for the derivation, my dear. The deflection torque is given as I square dm by d theta. Actually, this I square can be written as I into dm by d theta. And this one I can write it as I1 I2 dm by d theta. Like that I can go. Do you understand? This is the current passing through the current coil. This is the current passing the potential coil into dm by d theta, my dear. And if I write this ICC and this is a VPC by R, PC dm by d theta, my dear. So this is the deflection torque. If you want to make it average deflection torque, suppose if you want to go for average deflection torque, if you make the derivation of this with respect to sin omega t, that means if I take I1 as ICC as Im sin omega t and this as Im2 sin omega t, if I do it, what I am going to get deflection torque as ICC VPC cos phi by R into dm by d theta. That is the expression I am going to get it. Shivam ji, the two magnets are going to change the direction. Listen carefully, the two magnets ka direction change hoga. This side change ho gaya, this side also change hoga. Try to understand. This becomes south-north. Now north will become south. This will become north. This will become south. This will become north. At the same time, here also there is a possibility of change. So south to south reflection hoga. Try to understand, my dear. This is north-south. Abhi change ho gaya south-north. This is north-south. Abhi change ho gaya south-north. And this is also going to change south-north. And south repulsion continue hoga. Maza aa gaya. Chalo. So what is required for our gate? What is required for our gate? Please make a note of these points. I square dm by d theta is expression. I can write like this. ICC, IPC.
current passing through the current coil, current passing through the potential coil, and we are going to make it average torque. Why? Because if you want to do an average expression, why? Because our measurement of the dynamometer is suitable for average torque. So TD average, we are going to get ICC VPC by R cos phi. Why? Because when you make the derivative, when you make integration of these expressions, if you take I as Im sin omega t, I2 as Im sin omega t minus phi, and if you perform the average का formula क्या है? 1 by t integration 0 to t I of t dm dt, right? 1 by t integration of 0 t. Excellent, excellent. Okay, chalo. So now the deflection torque formula, the average deflection torque formula, please note down: current passing through the coil and the voltage across the coil and the cos phi into 1 by r dm by d theta, my dear. Okay, and the current controlling torque is equal to Kc into theta, my dear. Okay, so if you see this particular point, dynamometer can be suitable. If I am taking this expression I square into dm by d theta, is this expression, dynamometer can be suitable as ammeter, yes or not? Dynamometer is suitable as voltmeter. But if we want to use it as a wattmeter, if you want to use it as a power measurement, then small adjustment is needed. That adjustment makes this particular formula like this. Okay, so now dynamometer type ammeter का formula ये है. This dynamometer ammeter का formula है. Or else let me write here. Suppose if you take this TD is equal to I square dm by theta here itself. Dear students, listen. This is I square dm by d theta. Suppose if I write the controlling torque TC is equal to Kc theta. Okay, so what happens now? I square dm by d theta is equal to Kc theta. So theta is proportional to I square. So this is what we call dynamometer ammeter. And the same I can write V square, Dynamometer-Waltmeter, Dynamometer-Voltmeter. Dynamometer ammeter का expression non-linear है, Dynamometer-Voltmeter का expression non-linear है. Please remember these points clearly. Please listen these points clearly. Dynamometer is suitable for current measurement, voltage measurement and power measurement. But you are going to get the more reliable meter, more reliable reading for current, voltage or power. Dynamometer is best suitable for current measurement, voltage measurement, power measurement. Yes, power is you are going to get linear. So that's why dynamometer-wattmeter word came. Special word, dynamometer type wattmeter. Okay, na my dear. So what I want to say, dynamometer ammeter, dynamometer type ammeter, theta is proportional to I square. Dynamometer type voltmeter, theta is proportional to V square. Non-uniform. But if you see this expression at steady state, what happens? If you equal these expressions, theta is proportional to VPC ICC cos phi, which is nothing but theta is proportional to average power. So dynamometer type wattmeter is theta is proportional to average power. So if you take the relation of average power and theta, uniform. That's why dynamometer is best suitable for power measurement. Yes, for DC also same. Why? Because in DC there is no question of frequency. When there is no question of frequency, there is no losses. चलो चलो मजा आ गया.
मजा आ गया? एक्सेलेंट। ED is equal to ICC VCC cos phi into 1 by r, ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज डायनामोमीटर वाट मीटर की इक्वेशन है, डायनामोमीटर वाट मीटर की इक्वेशन है माय डियर। Why? Because you are going to make certain series resistance, you are going to attach dynamometer wattmeter. Okay, so now when you are making an adjustment to the diagram, so what is the adjustment? डायनामोमीटर वाटमीटर का डायग्राम कैसा होगा? डायनामोमीटर वाटमीटर का डायग्राम कैसा होगा माय डियर? लिसन, it contains the current coil, so single current coil, actually current coil is single only, but as for the constructional feature we have taken like this, single current coil only split into two parts so that in between my moving coil enters. Okay, so this is the current coil and this is our load my dear, and here comes our potential coil. Always remember, potential coil is expected to be purely inductive, but in market you cannot get inductive pure, definitely इसको resistance effect होता है. And to get the voltage across a potential, we are adding a external series resistance like this. So because of that we are going to get some extra better potential across this particular potential coil. So this is going to be attached to our main supply. तो ये है हमारा लोड. So this is our position of this particular thing. All of you understood my dear? So this is the shortest. Very good, very good, very good शिवम जी, very good. जितने लोग सेशन को लाइव में है एक बार मुझे थम्स अप दिखाए बेटा. क्या सब लोग नींद में गए? सर नींद में गए सब लोग? उठो जितने लोग. ना सुमित पवार जी, सतीश कुमार जी, वेरी गुड. जिंदा है? कोई है? चलो चलो, अभी आने वाला है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 वाट मीटर का मेथड. ओके, नाउ दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन माय डियर. I will tell about this connection. I will tell about this connection. Don't worry about that. So now please remember, this is what we call current coil CC. This is what we call potential coil PC. This is what we call single phase supply, AC supply, whatever that you are using, the single phase supply. And this is our current. There is a current split. There is a current passing through the potential coil you can take, and there is this the current passing through the load. Now the symbol of wattmeter, the symbol of wattmeter कैसा है? Always the symbol of wattmeter like this. Always electrical students, please remember this diagram. This is a symbol of wattmeter my dear. सिंबल ऑफ वाटमीटर कैसा होना है? कंपलसरी एक करंट कॉइल होना है, कंपलसरी पोटेंशियल कॉइल होना है, कंपलसरी एक सीरीज रेसिस्टर होना है. मजा आया? नाउ लिसन केयरफुली हियर, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू. सो यहां से आपको करंट पासिंग थ्रू द करंट कॉइल, द सेम करंट पासेस थ्रू द लोड. तो करंट का रीडिंग यहां से आएगा, कितना करंट जा रहा है यहां से आएगा, and the voltage these two terminals, so we are going to get the voltage across the potential coil. That's it. तो पावर का मेजरमेंट क्या है? पावर के लिए हमको जो कुछ चाहिए, वोल्टेज across the pressure coil and current passing through the current coil and the power factor. This is the single phase power equation, VI cos phi. But the problem here is there is a possibility of error. What is error? Let me tell you, सर ये कनेक्शन क्यों इधर रखना, मैं इधर भी कर रख सकता हूं. ये मूविंग कॉइल का कनेक्शन, मूविंग कॉइल इधर रख सकता हूं, इधर भी रख सकता हूं.
So because of the placement of the moving coil knob at the front of the current coil, at the back side of the current coil, based on that you are going to have error. So that error is called error due to pressure coil connection. क्या बोलते हैं उसको? Error due to pressure coil connection, my dear. Yeah, error due to pressure coil connection. फटाफट लिखेंगे इधर. So what is the error due to pressure coil connection? P.C connection. Suppose if I am taking this as the current coil, this is my load, and the potential coil, suppose if I am connecting at a mains side, this side, okay dear. So if I am connecting here this side, that means these are mains na. This is a load side. So if your potential coil is connected at the mains section, then this is called MC connection. How to remember, sir? Mains connected, mains side connection. Shortcuts बेटा, shortcuts mind में होना है बेटा. Got it? Or now listen carefully. मजा आ रहा है? This is case 1. There is a case 2 beta. So this is our current coil, this is our load, and this is our potential coil, my dear. This is a series resistance. And this time this knob is connected here, my dear, not at the front, at this side. So now, so this is our current coil, this is our potential coil. So this is our main supply, this is the load side. Now tell me, this is what connection? This is what connection? Everybody. Goenka ji, Pawar ji, Juhi Chawla ji, very good Shivam ji. This is what we call as LC connection. It is connected to load side. That's why हम उसको बोलते हैं LC connection. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड है माइंड में, कॉन्सेप्ट फिक्स है, आपको जरूर 1 और 2 मार्क्स का सवाल आने की चांस है. एलसी कनेक्शन, एलसी बोलो तो क्या है? लोड साइड कनेक्टेड. हु? प्रेशर कॉइल. ऑलवेज रिमेंबर, एरर इज ड्यू टू मेन साइड. हु कनेक्टेड? प्रेशर कॉइल. ओके ना? So this is our pressure coil, this is our series resistance, this is our current coil, and this is the current passing through the current coil, this is a current passing through the load, and this is our voltage across the pressure coil. मजा आ रहा है? Now tell me, actually what is the true power consumed by the load? Yes or not? True power बोलो तो क्या है बेटा? दोनों में एरर होना. कौन से यूज कर रहे हैं? शिवम जी वेट करो बेटा, वेट करो. अरे दोनों को भी यूज हैं. एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूज. मजा आ रहा है शिवम जी? ये वाट मीटर को भी एक तरफ से यूज कर सकते हैं, वो वाट मीटर को भी यूज कर सकते हैं. चलो, सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट इज द ट्रू पावर? द ट्रू पावर मींस पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड. एम आई राइट और नॉट? पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, दैट इज WL. What is the WL formula, my dear? That is a voltage across the load into current passing through the load into cos phi. Am I right or not, my dear? And of course, current passing through the load and current passing current coil is same. Voltage across the load and voltage across the potential coil will be same. So this is VPC ICC cos phi. Am I right? This is the true value. Am I right or not?
yes or not? पावर का फॉर्मूला यही है ना, द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, करंट पासिंग थ्रू द लोड, cos phi. So that is what we call the true value of the power measurement. But what actually happening the measurement value, the meter reading, what it involves, if you see the knob is here, that means in addition to this, see, if you check the meter reading, now what is happening here, my dear, please be careful. If you check the diagram carefully, in addition to this, there is some extra, देखो, in addition to load, there is an extra power consumption is also coming into picture or not? Yes. Are getting fear of exam day by day because those subjects I have studied, I feel, forget, leak of practice. Please, how can I plan, sir? Chill. Kamal Pratap Singh ji, just chill. Okay. When you are getting fear, just chill बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते. Everyday 1 second शो मूवी देखो आराम से. आपका मन में जो कुछ पसंद है वो कर लो. Okay, that's the only thing you can do for this 1 month. You are fearing, better do that. That's it. Not Delhi NCR वाले. Just chill बेटा. Gate is not life. Gate is not only the life बेटा. आप इलान मस्क का दोस्त हो सकता है, आप भी बिल गेट्स हो सकता है. हाँ, हम सब लोग गेट पढ़ के फाइनली गेट टीचर बन गए. इतना ज्यादा मत सोच लो. डोंट थिंक टू मच ऑफ एनीथिंग इज पॉइजनस. हम क्या किया, हमने बहुत पढ़ के फाइनली क्या हो गया, कुछ नहीं, गेट टीचर बन जाते बस. चलो, मीटर का रीडिंग क्या है बेटा, बस बताइए. एक्चुअली ट्रू पावर इज पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, बट मीटर का रीडिंग क्या है? मीटर का कनेक्शन देखो, मीटर कनेक्शन यहां है, पोटेंशियल कॉइल इज कवरिंग, सो दिस पावर, ये शैडो है ना, ये पिंक कलर का, दैट मींस मीटर का रीडिंग है in addition to this particular load, there is an extra power. What is that extra power? Can anybody tell me? Yes, that is a power consumed by current coil. Am I right or not? In short, I have written by. Power consumed by current coil is also coming to the picture ना, क्योंकि current coil के सामने लगा दिया connection. So this power plus this power, this power plus this power, this power plus this power. So what is the power consumed by the power consumed by the current coil? बताइए बेटा. Basic formula, power is equal to I square R. So I square R बोलो तो which R, which I we have to take? Please tell me. Current passing through the current coil and resistance of the current coil bus. So now please tell me from this, can I say this is the measurement value, my dear? पक्का हो गया बात. So this is the measurement value, my dear. So now tell me which is greater. True value is greater, measurement value greater, which is greater, my dear? Which is greater? यार ये क्या प्रिंट है man? ना. Obviously, which is greater? Measurement value is more greater ना. That's it. एरर का फॉर्मूला आ गया. अभी बताइए मेजरमेंट का, दैट मींस बाय यूजिंग द वाटमीटर, बात आवाज क्लियर है? मेरा आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन दीजिए बेटा. हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर है? हाँ. सो मीटर का रीडिंग जो कुछ है कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, विच इज मोर एक्स्ट्रा. यस. व्हाट इज द एरर नाउ? एरर क्या है? एरर is equal to what? Measurement value minus true value. So true value ये खत्म हो जाता, error is equal to I square RCC. अभी शिवम जी, are you there, my dear?
हाँ, शिवम जी पूछ रहे हैं सर ये कहाँ यूज करना, वो कहाँ यूज करना। ओके, मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, आई हैव 1 गर्लफ्रेंड एंड आई हैव अदर गर्लफ्रेंड, तो हाउ शुड आई मेंटेन द रिलेशनशिप विद गर्लफ्रेंड 1 एंड गर्लफ्रेंड 2। ये बहुत कमाल की बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना है ये बात पर। तो एरर इतना है, ओके, अगर हमने ये पर्टिकुलर कनेक्शन को यूज करना को तो कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज करना। ऑलवेज वी एक्सपेक्ट लेस एरर माय डियर। यस, आपको एरर कम होना है। एरर कम कब हो सकता है, इफ यू वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर कनेक्शन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यू हैव टू चूज सच ए सिचुएशन। आपको एरर कम आना है, एरर लेस आना है। अगर ट्रू वैल्यू आना बोलो तो एरर कम होना है। एरर कम होना बोलो तो व्हाट, करंट पासिंग थ्रू द करंट कॉइल मस्ट बी लेस। Current passing through the current coil is much less means current passing through the load is also less. Current passing through the load कब हो सकता है? Very good. Current passing through the load कम होना है, high resistance load, small current, high load. Am I right or not? Shivam ji, current passing through the current coil and current passing through the load both are equal. That means suitable for high load, high loads like refrigerator, high loads like big motors, and when higher load smaller currents. मजा आ गया? हाँ, शिवम को मजा है, अभी शिवम को पता हो गया, अभी शिवम को अंडरस्टैंड हो गया गंगा को कैसा प्रैक्टिस, गंगा से कैसा रिलेशन मेंटेन करना, पार्वती से रिलेशन कैसा मेंटेन करना, अभी शिवम को पता हो गया। हाँ, गंगा पार्वती से रिलेशनशिप कैसा मेंटेन करना भी पता हो गया। हाँ राइट, मजा आ गया। हाँ, रिमेंबर माय डियर, दिस एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दिस एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बट रिमेंबर ये एग्जाम में याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको। अगर ये आपको डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको ये डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, रन टाइम में कर सकते हैं ना बेटा। चलो चलो चलो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट माय डियर, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। फटाफट बताइए अभी इसमें क्या है। अगेन दिस इज व्हाट कनेक्शन, एलसी कनेक्शन, एलसी कनेक्शन। सो दिस इज द लोड VL IL cos phi, VL IL cos phi. So this is our true value. What is the meter reading now? The meter reading will be what, my dear? If you see the meter connection, so the meter connection is here. The meter connection is like, okay, now it includes this power and this power. It includes this power and this power, and it includes what now? The power consumed by the power across, power taken by the load plus power consumed by which coil? Pressure coil. Power consumed by the pressure coil. अभी बताओ, what is the power का formula? Power is equal to I square R, sir. I square R, sir. So this I square R बोलो तो I square R, sir. Current passing to the pressure coil, sir. Resistance of the pressure coil, sir. So what I can take now? This will be WL, my dear. So this I can take it as VPC by R. So this is going to become VPC by RPC whole square. So VPC 1 RPC get khatam, V square by RC. So what is the error now? Error in which connection this is? This is LC connection, load side connected. Error in LC connection. LC connection क्या है? VPC by RPC. मजा आ गया? अरे कितना आराम की बात है, बहुत इजी है ना मैनेज करना। हाँ, ऐसा नहीं होता भैया, रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है, मुझे पता है रियल लाइफ में कितना करना दो गर्लफ्रेंड्स। चलो VPC स्क्वायर बाय RPC, शिवम को बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, लेकिन मुझे तो यस शिवम जी परफेक्ट। नाउ बताइए, एरर कम होना है, एरर कम होना बोलो तो क्या है इधर? अपोजिट। If you are expecting error, so this VPC must be low. This VPC must be low means the voltage across the load must be low. Yes or not?
So it is suitable for low loads. Low loads means they will attract more current. Do you understand? Understood? For higher currents, low loads. So please make a note of this point. Suitable for excellent. Mazda aa gaya. So this is the basics of error due to connections. Please make a note of, my dear. Error due to PC connection, pressure coil connection, and error due to, and have you observed beta, whether it is a LC connection or whether it is a MC connection, और LC connection हो और MC connection हो, ये दोनों में error किसकी वजह से आ रहा है? Whether it is a LC connection or whether it is a MC connection, error due to what? Always remember, whether it is a LC connection or MC connection, sometimes in the diagram आपको figure देता है, picture देता है, picture देखने से आपको mind में आना है, formulas को by heart करने की जरूरत नहीं है. Whether it is a LC connection or MC connection or whatever it is, the error is always due to the coil which is connected to load side. Always remember, whether it is a LC connection or MC connection, the error is always due to the coil which is connected to the load side. If you see in the MC connection, current coil is connected to the load side. In MC connection, the current coil is connected to the load side, so error will be due to current coil. And if it is a LC connection, so this particular, which coil is connected to the load, potential coil is connected to the load, so the error will be due to the potential coil. Easy to remember, na? Easy to remember or not? Easy to remember or not? Technique. What is the technique, my dear? Whether it is LC connection or MC connection, the error is always due to the coil which is connected to the load side. In this picture, the coil which is connected to the load side is potential coil, so definitely error will be due to potential coil. And if you see this picture, in this, current coil is connected to the load side, so here the error is due to current coil. That's it. This is single phase supply, my dear. जो कुछ हमने डिस्कस किया है अब तक, this is always single phase power. But in industry, single phase power is not suitable. इंडस्ट्री के लिए हमने 3 phase power को जाते हैं. आपको पता है इलेक्ट्रिकल बच्चों को मैं बार बार उसको no need to give introduction. 3 phase power is the greatest power. 3 phase power is having more voltage. 3 phase power is having a circular rotating magnetic field possibility. 3 phase power can make the machines to auto start. Rotating magnetic field hai, and 1 3 phase supply is equal to 3 single phase supply, but vice versa is not true. ये सबको आप पता है. हाँ प्रतीक शर्मा जी, वही बात कर रहा हूं बेटा. Sir, why current coil is highly inductive and PC coil is highly resistive? Excellent question. Dear student, yeah, I understood your doubt, Shivam ji, but that is again a big topic. The pressure coil we expect to be purely resistive. When we expect purely resistive, then only we are going to get here R. Please come back. Please come back to this picture. Here we have taken R, right? Have you observed we have taken R here? This is possible when pressure coil is purely resistive type. But it is not possible. Pressure coil is having an inductance and a resistance. That's why here we cannot get R, we will get Z. This Z is equal to R plus J omega L. So this is the resistance of the pressure coil, this is the inductance of the pressure coil. When pressure coil is purely resistive,
the current passing through the pressure coil and the voltage across the pressure coil both will be in same phase. If it is purely resistive, the current and the voltage both will be in phase. But as we are having some inductance effect, so this is a scenario. And it is also not correct. It is neither purely inductive. If it is purely inductive, we will have 90 degrees. As it is not purely inductive, we are not having this. So this is going to be the angle of IPC, my dear. So because of this, there is a phase shift error. Do you understand, Shivamji? So we expect the pressure coil as purely resistive. That's why if you see any textbook, my dear, the wattmeter का diagram, किधर गया रे? wattmeter का diagram ऐसा भी नहीं होता. इधर wattmeter का symbol ऐसा भी नहीं होता. wattmeter का symbol ऐसा होता है. Actually, practically, this is the wattmeter symbol. That's it. If you see any textbook, the pressure coil will be shown as a resistive, but this is for pure resistive pressure coil. लेकिन practically ऐसा नहीं होता. कोई coil भी pure resistive नहीं होता. That's why it is having inductance effect. Because of the inductance effect, we are having the losses. That's why we are adding a series resistor, my dear. प्रतीक जी, that's why we are adding series. ये series resistor कहाँ से आ गया? आपको पता होना है series resistor कहाँ से आ गया? अरे why we added the series resistor, my dear? As the pressure coil is not purely resistive, it is having some inductance effect also. Because of the inductance effect of this pressure coil, we are having some phase shift error. To reduce that phase shift error, we are adding some external series resistors so that the error can be minimized. उसको more accurate करने के लिए, yes, प्रतीक जी, more accurate करने के लिए series. A series resistor is not the feature of pressure coil. The series resistor is not the self resistance of the pressure coil. Pressure coil को और एक resistance है, self resistance है. Actually the picture is like this, my dear. Actually picture कैसा होना है? This is the actual picture. Actually इसको भी एक resistance है. अंदर की बात है. ऐड आता ना, ये अंदर की बात है. अक्षय कुमार का ऐड आता ना, ये अंदर की बात है बोल के. अक्षय कुमार का, संजय दत्त का, ये सब लोग बहुत बिजी है आजकल अंदर की बात का एडवर्टाइजमेंट देख के. एक आदमी आता पान पराग का ऐड देते हैं, एक आदमी आता इंपीरियल ब्लू का ऐड देते हैं. मजा आ गया. So this pressure coil is not neither purely inductive nor purely resistive. Neither purely inductive nor purely resistive, my dear. That's why that phasor diagram is most important. We expect the phasor diagram of inductance like this. The current passing through the pressure coil and the voltage across the pressure coil must be 90 degrees phase shift to each other if it is purely inductive. If it is purely resistive, like this. It is neither purely resistive, it is nor purely inductive, that's why like this. Juban Kesri. करंट कॉइल का कुछ भी बात नहीं बेटा. करंट कॉइल में क्या है? करंट कॉइल वी एक्सपेक्ट टू बी मोर थिक ना. करंट कॉइल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. करंट कॉइल वी ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर करंट अलोयंस, दैट्स इट. सिंपल की बात है बेटा. हाईली रेसिस्टिव है तो करंट का पासेज नहीं होता ना शिवम जी. करंट कॉइल का बेसिक फीचर क्या है? इट शुड अलो द मोर करंट. इफ इट इज हाईली रेसिस्टिव, इट इज हाईली इम्पॉसिबल. स्टोरेज कैपेबिलिटी होना है, ज्यादा स्टोरेज कैपेबिलिटी होना है ना. यस, चलो. नाउ लेट अस मूव फॉर दी. चलो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर दी 3-phase पावर मेजरमेंट, if you are going for the 3-phase measurement, my dear,
In three-phase measurement, how it will be? Yes, thank you. In three-phase star model, if you take the three-phase star model, फटाफट, let us take the three-phase star model. आप सब लोग को पता है three-phase star model. So this is our so let us take this R sequence. Let us take this as a Y sequence. Let us take this a B sequence. RYB sequence. मजा आ गया आपको? Not only that, beta, storage capability also matters. Okay, chalo. This one, listen carefully. So if you take this the pH, Z phase, three phase. So if I am taking this a neutral connection also into picture. So this is the current passing through the R, this is the current passing through the phase. So this is a current passing through the Y. This is a current passing through the phase. This is a current passing through the B, and this is a current passing through the phase. And the voltage across this. So this is R. So this is VRN. And this voltage I can take VYN, and the voltage across this I can take VBN. Got it? VRN, VYN, VBN. These are what? VRN, VYN, and VBN. So these are our phase voltages. And next, IRN is current entering here. So if you take these currents, this is IRN, this is IBN, this is IYN. Are you understanding? I think these all basics आपको पता है. Yes, आपको पता है ना ये basic. So IRN, IYN, IBN. So these are called phase currents. And the current passing through this line current, IR, IY, IB, these are the line currents. And if you take the voltages, so we can take this is a VRB, so this is the VBY, and this is VYR. So VR to B, VB to Y, VY to R, these are all line voltages. मजा आ गया? So line voltages, line currents, phase voltages, phase currents के बारे में आपको पता है. And for a star model, what is the fundamental point? VL will be √3 times of VPH, and line current is equal to phase current. I think all of you know this, right? ये पता है ना आपको? हाँ, चलो. Suppose similarly if I go for the delta model, so in delta model, so this is the ZPH, the ZPH, the ZPH, this is R, this is Y. Now this is the current IR, this current IY, this current IB, and this voltage
VRY, this voltage VYB, this voltage VBR. So here if you take line voltage and phase voltages are same, and line current is equal to √3 times of phase current. These are basics of circuit theory. In networks we can get it. I think all of you know these points. Everybody watching this session, जितने लोग जिंदा हैं, कोई है? हाँ, पर्णा जी है, थैंक यू. शिवम जी आए और गंगा के पास गए. चलो चलो, let us see. Now there is one important thing actually 3 phase power measurement करने के लिए, अगर if you are having a 4 wire system, then how many wattmeters are required? 4 wire system means RYBN. How many wattmeters are required? Fatafat, please see here. So this is again I am talking, this is our 4 wire system. बोलो तो क्या है? In addition to phases, so this is R line, this is the Y line, this is a B line. In addition to this, there is a 4th line, that is a neutral line. Now how many number of 3 phases na? So between R and N 1 phase, between Y and N 1 phase, between B and N 1 phase, 3 phases. So 3 wattmeters are required in this situation if we have a 4th common line. In addition to R line, Y line, B line, if you are having RYB plus N, then 4 wattmeters are enough. How to connect? See here. See, dear students, listen carefully. So this is our current coil and this is our potential coil. See my dear, I'm taking potential coil diagram like this now. Okay ना, अभी सबको पता हो गया potential coil ideal diagram है, ideal diagram. So this is wattmeter 1. Understood? Next, this one current coil and this is I am connecting here wattmeter 2. Next, if you see this one is a current coil, the potential coil so this is our wattmeter 3. All of you understanding my dear? So this is actually RYB with a 3 phase symmetrical balanced but 4 wire system. So we are having 3 wattmeters my dear. Got it? So wattmeter 1 will give you between VRN, IRN, cos phi. Wattmeter 2 between VBN, between IBN, cos phi. Wattmeter 3 between VYN, IYN, cos phi. Now my dear students, let me ask you one question here. Let me ask you one question here. Are you ready for my question? My dear student, all of you ready for my question? If I am using 3 phase power measurement, 3 phase का power measurement हो गया, तो अभी 3 phase power reading क्या है? W1 plus W2 plus W3. So that is nothing but 3 phase power na. Now listen, if I am using this methodology with neutral line separate, how many wattmeters are required? 3 wattmeters. 3 wattmeters means how many coils?
एक particular wattmeter will have two current coils and one particular potential coil. If you take in-depth diagram, so here how many coils? 3 coils. Here how many coils? 3 coils. Here how many coils? 3 coils. 9 coils. Economically 9 coils are required, my dear. Cost बढ़ गया, weight भी बढ़ गया. Cost increased, weight also increased, and most important thing, losses also increased. Whatever may be the case, the more is the number of components, definitely losses will be more ना. एक वाटमीटर कंस्ट्रक्शन के लिए 2 करंट कॉइल्स एंड वन प्रेशर कॉइल, सो 3 कॉइल्स चाहिए. अगर आपको 3 फेज पावर मेजरमेंट करने के लिए 3 वाटमीटर्स यूज किया, टोटल 9 कॉइल्स चाहिए. 9 कॉइल्स में लॉसेस भी हो सकता है. The more is the number of components, the more is the possibility of losses, my dear. Yes or no? Excellent, excellent. If I'm considering the current coil 2, fundamental diagram, one current coil is split in 2 parts. So one current is split into 2 parts, 2 plus 1 moving coil, 3. 1 wattmeter के लिए 3 चाहिए, 9 coils. That's why there is one Baba. The Baba is Mr. Blondel. Mr. Blondel Baba, ये बाबा क्या बोला? ये बड़ा बाबा है इलेक्ट्रिकल का. 3 फेज पावर को बाबा बोलते हैं उसको. जितने लोग साइंटिस्ट है मैं उसको बाबा बोलते हैं. ये बाबा ब्लॉन्डल ने क्या बोला? If a network is supplied through n conductors, the total power is measured by summing the readings of n wattmeters, so arranged that a current element of a wattmeter in each line and the corresponding voltage element is connected between that line and common point. If this point, please listen, if the common point is located on one of the lines, then the power may be measured by n-1 wattmeters. Please underline that line, Aparna ji, Vikas ji. If the common point is located in one of the lines, then the power may be measured by n-1 wattmeters, my dear. So this is what we call as Blondels theorem, my dear. How it is possible? Now let us go for that. If you want to show that how to draw symmetrical 3-phase 3-wire system RYB sequence, फटाफट करवेंगे. So see here. So this is my, there is no separate line now. All of you following, my dear? मजा आ रहा है आपको? मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लर्न एज पर द नीड कर रहा हूं. एग्जाम के लिए क्या चाहिए वो बता रहा हूं आपको. So this is my R, this is my Y, this is my B. So this time what I will do, instead of common line at neutral, I won't take neutral common line, my dear. Here I won't take neutral common line. Instead of that, I will take one of the line as common. If I am taking one of the line as common, so see here, now if I am attaching this one, so here one current coil and this is my 1 wattmeter. So this one I am connecting here. Understood? So this one is W1. All of you understanding? Now if I am taking this Y line, जिंदा है? कोई है? If you take Y line, just a small cut here, and this is my current coil. And this is my potential coil. Understood? So now this is wattmeter 2. Got it? So this point
I am taking the voltage. So this voltage is between R and B. This is VRB. Okay, and this is VYB. VRB and VYB. That's it. And this is wattmeter 1, this is wattmeter 2, and this is a current passing IR, and this is a current passing IY. So Blondel is telling that by using the two wattmeters, so wattmeter 1 will give you the reading of line to line voltage VRB, and IR cosine angle between VRB and IR, and W2 is giving, all of you clear up to this, VYB between the Y and B line, and IY, all of you following my dear, मजा आ रहा है आपको? Yeah, IY cos angle VYB between IY. How many of you understanding this dear? जूही चावला, प्रतीक, अपर्णा जी, क्लियर है? थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पेशेंस होना चाहिए. सो उसका मतलब क्या है, अभी ये दो वॉट मीटर्स में रीडिंग जो कुछ आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू 3 फेज पावर. हाउ इट इज पॉसिबल सर? आपने दो वॉट मीटर यूज किया रहे, मुझे अर्थमेटिक आता है, मुझे मैथमेटिक्स आता है सर, मुझे 1 + 1 + 1 = 3 है सर, इतना तो मैं पढ़ चुका हूं सर, आप मुझे चीटिंग कर रहे हैं सर. दो वॉट मीटर से आपको 3 फेज पैसा कैसा आएगा? अरे मुझे नहीं, ब्लॉन्डल बाबा ने पूछा. चलो प्रूव करेंगे. उसको प्रूव करने के लिए मुझे ए चाहिए, फाई चाहिए, द कोसाइन एंगल बिटवीन द VRB एंड IR चाहिए, कोसाइन एंगल बिटवीन द VYB एंड IY चाहिए. उसके लिए अब फेजर डायग्राम ड्रा करना है. रेडी है फेजर डायग्राम के लिए? कितने लोग फेजर डायग्राम के लिए रेडी है? वी वांट टू गो फॉर द फेजर डायग्राम माय डियर. इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को फेजर डायग्राम तो पक्का आना है ना? इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को फेजर डायग्राम तो पक्का आना है. यस. सो फर्स्ट टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम आई विल स्टार्ट विथ VRN, VYN, this is a VBN, 120 degrees phase shift na. So this is my VRN phase voltage, this is my VYN, this is my VBN, which is nothing but phase voltage. And we know the phase current obviously lacks the phase voltage because we are taking majorly inductive load. In inductive load, voltage leads, current lags. Okay na? We are taking the inductive load my dear. That's why it is a 3-phase star model lagging power factor. Lagging power factor बोलो तो inductive load है. Inductive load के लिए phase current will be lagging. So let us take this a phase current IRN. So this is our IYN. And this is my IBN. Okay. So this is what I'm taking as IRN. This is my IYN. This is my IBN. If you see, it's a star model. For a star model, this IRN is equal to IR, which is nothing but line current. If this is VRN, this is nothing but VPH, but it is not line voltage. Clear hai? That's the path clear hai. Okay. And now if you take, what is this angle? This angle is nothing but phi na. Yes. Chal. But हमको क्या angle चाहिए? We need an angle of what? We need an angle between what? एक second, this particular thing. हमको क्या एंगल चाहिए बेटा? इफ यू सी दिस पिक्चर, हमको क्या एंगल चाहिए इधर? वी नीड द एंगल बिटवीन VRB एंड IR. सो वी नीड द एंगल बिटवीन VRB एंड IR फर्स्ट. VRB एंड IR चाहिए. तो VRB कैसा आएगा आपको? टू टेक द VRB एंड IR. सो व्हाट इज VRB माय डियर? VRB is nothing but the phasor addition of VRN minus VBN. Yes or not?
That means we can take it as VRN plus of minus VBN na? VRN plus of minus VBN. That means if we extend this VBN to this side, or if you're following my dear, मजा आ रहा है नहीं? So if you extend this with yellow color, what is this? So this is what we call minus VBN. So what is the resultant now? The resultant between VRN and VBN के बीच में resultant आएगा VRB. So if we extend this, तो इसका resultant है आपको एक सेकंड क्रॉस हो गया. So now if I take this resultant angle, थोड़ा सा क्रॉस आ रहा है डायग्राम. Just a second, just a second. This particular thing, the resultant what I am getting, so this is what we call as VRB. ये क्या हो गया? VRB हो गया. सही है? ओके, थैंक यू, थैंक यू. VRB आ गया. सो अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे ए एंगल चाहिए ना. So this is IRN. IRN is nothing but IR. तो अभी मुझे क्या एंगल चाहिए? The angle between VRB and IR चाहिए. So this angle I need, my dear. This particular angle I need. So what is this angle? Can you tell me? So this angle कितना है? So if you see, this total is 120. Please, all of you are able to see this picture. Can you tell me what is this angle? I need this angle, my dear. So what is this particular angle? ये एंगल कितना है? ग्रीन कलर एंड रेड कलर के बीच में एंगल जो कुछ है वो कितना आना है? बताइए प्रतीक जी. ग्रीन कलर एंड रेड कलर, ग्रीन कलर एंड दिस पिंक कलर के बीच में एंगल कितना है? इफ यू सी, दिस एंगल वाज टोटल 120 डिग्रीज. ये कट करके 60 किया है. ये 60 हो गया, ये 60 हो गया. ओके ना? And this one is making 30 and this 5 gone, so this will become 30 minus 5 na. Excellent. 30 minus 5. Everybody clear or any doubt you can ask me. थोड़ा सा diagram में I will do one thing for clarity purpose. What I will do, dotted line भी है इधर. Thank you, thank you.
इस डाटा लाइन से प्रैक्टिस नहीं है। एक सेकंड एक एडजस्टमेंट करता हूँ मेरी तरफ से। अभी क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है? परफेक्ट। अभी क्लियर हो गया ना? यस, दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट। मैं ये शिवम से सीखा हूँ। I learned this from Shivam, how to manage the things. Okay, Shivam is very perfect in learning all these things. If things are not going normal, we have to go out of the box and we have to do things. Okay, so this angle is our, ये क्या है? This particular angle क्या है? This particular क्या है? This is our VRB है. So this is our VRB है. This is what IR है. Okay, this is IR है, and this angle है 30 minus 5. 30 minus 5. Okay, next what? Next I want VYB and IY. Next I want VYB and IY. Okay, VYB and IY. VYB का आंसर क्या है? VYB बोलो तो फटाफट बताइए। VYB बोलो तो VYN minus VBN. That means VYN plus of minus VBN. So this is VYN, this is VBN. So definitely ये easy है. So this is going to be our diagram. So this is our, actually हमको ये problem क्या है कि ये just I'm moving. हाँ देखो, now I am taking the resultant of VYN and VBN. Okay, so this is VYN, this is VYN and VBN. So this is my resultant green color. So this is what we call as VYB, and I need the angle between VYB and IY. So this angle, actually this is phi. So now I want this particular angle. So this angle we got 30 minus phi. This angle will be 30 plus phi na. All of you clear or not? सर आप साइड लेकर आ जाए करो, जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे। शिवम जी ऐसा स्लाइड्स लेके आना बहुत इजी है मुझे। शिवम जी स्लाइड्स लेके आना बहुत इजी है, लेकिन मैं लाइव में फेजर डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। मैं लाइव में फेजर डायग्राम ड्रा करना दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को फेजर डायग्राम प्रैक्टिस होना है। Why? Because certain questions are there, certain gate questions are there. वो questions को आंसर करने के लिए आपको जरूर फेजर डायग्राम खुद से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। That's the reason why I have taken. Otherwise, take a snapshot, keep it, और फटाफट। आजकल तो डिजिटाइजेशन, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है शिवम जी ऐसा कामदार में, स्लाइड में, साइड में, सब कुछ आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है शिवम जी। ये 30 प्लस 5 है, ये 30 माइनस 5 है। मजा आ गया? So the angle between this we got as 30 plus 5 and angle this between we got as 30 minus 5. खेल खत्म बस। All of you understood? एक बार मुझे थम्स अप दिखाइए बेटा, बहुत थक गया हूं भाई। 10:30 हो रहा है, 10:30 बजे हो रहा है। आई नीड जितने लोग जिंदा है, जितने लोग लाइव में हैं, जितने लोग है और नहीं है, और चले गए बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, मजेदार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। And why I have taken this much time, you know, my dear, if you know this particular understanding, खेल खत्म, over story. Total 2 वाटमीटर मेथड का स्टोरी खत्म हो गया। 2 वाटमीटर का मेथड, ये दोनों टर्म्स पे ऊपर बिन है। Okay, so what is that? Listen carefully. What is the W1? The W1 is between VRB into IR, the cosine angle between VRB and IR. Am I right? Yes or not? VRB and IR. So what is the angle? If I write, so this is VRB into IR, this is cos 30 minus 5.
This is nothing but a line to line voltage VL. This is nothing but a line to line current IL, and this is cos 30 minus phi. Phi star पक्का माइंड में फिक्स कर दो. W1 is equal to VL IL cos 30 minus phi. नेक्स्ट W2. W2 क्या है बेटा? VYB. VYB into IY cos of VYB and IY के बीच में है. So if you simplify that, VYB IY cos of 30 plus phi है. This is nothing but line voltage VL. This is nothing but line current IL cos 30 plus phi. हो गया. 2 watt meter में जो भी क्वेश्चन आओ, 2 watt meter method में water में भी the question comes, my dear, with these 2 formulas you can kill that problem. You can crack that problem. अगर ये 2 फॉर्मुलास आपके माइंड में है, 30 minus 5 30 plus 5, 30 minus 5 30 plus 5, 30 minus 5 30 plus 5, खत्म हो गया खेल. W1 W2 देखो अभी फटाफट मैं क्या कर रहा हूं. देखो, when W1 is equal to VL IL cos 30 minus phi, this is equation number 1. W2 is equal to VL IL cos 30 plus phi. This is equation number 2. Please do W1 minus W2. If you do W1 minus W2, VL IL brackets open cos 30 minus phi minus cos 30 plus phi. So VL IL cos A cos B plus sin A sin B. हम बोल रहे हैं क्या सर, क्या कर रहे हैं सर, कहां से कहां तक जा रहे हैं सर आप? शिवम जी मैं किधर भी नहीं जा रहा हूं बेटा. चलो, साइन cos 30 cos phi खत्म हो गया. तो दिस विल बिकम VL IL 2 times of sin 30 cos phi. Sin 30 is equal to 1 by 2. So VL IL cos phi आ गया. Any mistake please tell me. Any mistake from my side please tell me. Where फटाफट cos A cos B plus sin A sin B, cos A cos B minus sin A sin B, फट 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 खत्म खत्म खत्म. This is equation number 3. Next, if you go for W1 plus W2, पेशेंस होना है. तो W1 plus W2, tell me. W1 plus W2 क्या होगा? VL IL cos of 30 minus phi plus cos of 30 plus phi. VL IL cos A cos B plus sin A sin B plus cos A cos B minus sin A. यार ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं सर, मुझे पहचान में नहीं आ रहे. ऐसा सोच रहे हैं प्रतीक जी. 2 cos 30 cos 30 √3 by 2. अभी आ गया मजा, मजा आ गया रे. √3 cos phi. Right? Any mistake? So if you see this now, √3 VL IL cos phi आ गया. This is, देखो carefully my dear,
Can anybody tell me what is the extraction that you understood from this? What is the extraction that you understand from this? अच्छा मिस्टेक किया सतीश, sin phi होगा cos phi. सॉरी, सतीश इज अलाइव, बाकी सब लोग डूब गए हैं, सब लोग बिस्तर के ऊपर चले गए, शिवम तो फर्स्ट चले गए हैं, सब लोग चले गए. परफेक्ट, परफेक्ट. What do you understand? Satish ji, what do you understand? W1 plus W2 क्या आ गया आपको? If you observe closely, what is this W1, my dear? This is a star model. We have taken a star model, na? So for a star model, VL is equal to root 3 VPH, na? IL is equal to IPH, na? हाँ? अभी क्या होगा बेटा? So this is root 3. This is root 3 VPH. This is IPH cos phi. So आपको 3 फेज का पावर आ गया ना, 3 फेज का पावर आ गया. 2 वाट मीटर्स यूज करके आपको आराम से 3 फेज का पावर आ गया बेटा. कितना कॉइल्स नंबर सेव हो गया? 3 coils have been saved. 6 coils, just 6 coils. Number of coils reduced, losses reduced, cost reduced, weight reduced. अरे इतना रिडक्शन हो गया, पैसे मिल गया मुझे, मजा आ गया. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? जितने लोग लाइव में हैं एक बार मुझे थम्स अप दिखाया बेटा, जिंदा कितने लोग हैं? मजा आ गया. नाउ ब्लॉन्डल बाबा जो कुछ बोलो वो सही है. 2 वाट मीटर्स यूज करके हमने 3 फेज का पावर मेजर कर सकते. VPH IPH प्लस VPH IPH प्लस VPH IPH, सही है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू माय डियर, 2 वाट मीटर मेथड से आपको और एक भी है. अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस पावर? VL is equal to root 3 VPH and this is IPH sin phi. Can anybody tell me what is this power? This is nothing but reactive power, na? So 2 वाट मीटर मेथड का एडवांटेज क्या है? 2 वाट मीटर मेथड से आपको नंबर ऑफ कॉइल्स में रिडक्शन हो रहा है, लॉसेस कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, कॉस्ट मिल रहा है, साइज कम हो गया, इक्विपमेंट का साइज कम हो गया. एट द सेम टाइम सिंगल पैकेज में 2 मिल रहा है. शिवम बहुत इंटरेस्टेड है, हमको सिंगल पैकेज में 2 मिल रहा है. रिएक्टिव पावर मिल रहा है, एवरेज पावर, रिएक्टिव पावर मिल रहा है, एवरेज पावर मिल रहा है. मजा आ गया प्रतीक? चलो. नाउ आई अंडरस्टूड. इन एग्जाम विच फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर? एग्जाम के लिए क्या फॉर्मूला रिमेंबर होना है? एग्जाम में फटाफट करने के लिए विच फॉर्मूला इज बेस्ट टू रिमेंबर माय डियर? विच फॉर्मूला इज बेस्ट टू रिमेंबर? If you remember this formula, it's enough, na? W1, W2, if you remember, it's enough, na? If you remember these 2 formulas, enough, na? Yes, that's it, my dear. So we got 1, 2, 3, 4. एक बार मुझे summarize करना चाहता हूँ. What is 1? W1, VL IL cos 30 minus 5. This is equation number 1. W2, VL IL cos 30 plus 5. This is equation number 2. And first W1 minus W2 को क्या आएगा? VL IL sin phi आएगा.
VL IL sin phi आएगा. This is हमारा सतीश is alive. He has corrected me. Thanks सतीश. Next W1 plus W2 कितना आ गया? VL √3 ना, √3 VL IL cos phi. This is equation number 4. Now if you take the number 3 by 4, you are going to get one interesting thing. W1 minus W2 by W1 plus W2, that is VL IL sin phi divided by √3 VL IL cos phi. So this is going to become tan phi by √3, 1 by √3 tan phi. So from this we are going to get one more expression for power factor. What is that power factor? What is that? From this I am going to write tan phi is equal to √3 times of W1 minus W2 by W1 plus W2. मजा आ गया? This is what we call power factor angle भी आ गया. Please keep this particular slide as a 5-star. बस गेट के लिए ए चाहिए. मैंने पूरा प्रूफ भी दिया है आपको. एग्जाम में अगर आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर नहीं है, ये फॉर्मूला अरे फंडामेंटल ये स्पीचलेस. नेगेटिव पावर की. व्हाट इज नेगेटिव पावर? Enough for today बेटा. मजा आ गया? नेगेटिव पावर कैसा आ गया रे? Who is this fellow? I didn't understand negative power. I don't understand negative power. What is negative power? Yes, Shivam ji, static error and limiting error. Measurement value minus true value. That's it. Relative static error means measurement value minus true value by true value. Okay, okay, leave it my dear. चलो, clear है? So please follow the DPP. I have given some questions related to this particular formulas. आपको DPP है, DPP में आपको questions मिलेगा. Please follow this. थैंक यू सतीश. सब लोग बन सकते हैं. मैं बोला ना, गेट पढ़ के पढ़ा के टीचर बन गया. गेट पढ़ के पढ़ा के फाइनली क्या हो गया? टीचर बन गया. नाइस. धन्यवाद. चलो प्लीज, जो डीपीपी में डाउट्स आ रहे हैं, अगर डीपीपी में कोई क्वेश्चंस में मिस्टेक और कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहे, प्लीज
यस्टरडेज एंड टुडे सेशन का डीपी में जो कुछ डाउट्स है आप ये सेशन होने के बाद भी मेरा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ओके ना, कमेंट बॉक्स में डालो. मैं टुमारो मॉर्निंग आई विल गो थ्रू, टुमारो डे टाइम है ना, तुम्हारा पूरा डे टाइम है. आई विल गो थ्रू व्हाट आर योर डीपीपी क्वेश्चन डाउट्स एंड इन द नेक्स्ट tomorrow's class first I will solve those DPP question and we'll move for energy meter. चलो, thank you, bye, thank you all, thank you dear.